Hi there guys, welcome back to my channel. So I know this is a very unasked for video, lekin this is like something that I needed to do for myself. So if you're not in the mood for watching like a lambi heart-to-heart video, you can definitely skip because this is one of those and I will be talking quite a lot in this because मुझे अपना दिल हल्का करने की ज़रूरत है and this is the only way that I can really do it. So no judgments here. खैर, so I just realized something जो मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले भी बताया था, वो ये था कि regardless of what's happening in someone's life, जो कि बहुत obvious बात है कि हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हर वक्त चल ही रहा होता है जो उनको शायद डाउन कर देता है, अपसेट कर देता है. एंड समटाइम्स यू कैन लुक अवे, लाइक यू कैन जस्ट नॉट फोकस ऑन दोज इश्यूज एंड यू कैन जस्ट मेक योर सेल्फ फील बेटर. लेकिन कभी कभी इस तरह का डाउनर आ ही जाता है दैट यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन and you feel sad. And feeling sad and being patient are two different things. You can feel sad even while being patient. So I know that I'm being very patient. ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब मेरे अंदर बहुत सब्र है और अल्लाह ताला ने ही डाला है, being very very honest. लेकिन again the coping mechanism. So the thing is कि मैंने ये चीज़ realize की कि जब मैंने अपना चैनल बनाया था ना शुरू में back in 2014, तो उस वक्त भी सीन यही था that I had just moved from कराची to लाहौर. ठीक है, मतलब पूरी एक ज़िंदगी सेट हुई हुई थी कराची में. I had started university, मैं AIFD जाना शुरू हुई थी and I was there for like 6 months or something. And एक sudden news मिली थी कि बस we're moving to लाहौर because दादी wants to, she really wants to, you know, live there. तो बहुत अच्छे दोस्त बना लिए थे, बहुत एक सोशल लाइफ सेट हो गई थी, सब बहुत अच्छा था. एंड इवन माई बेस्ट फ्रेंड जो अभी तक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, शी यूज्ड टू बी माई नेबर. सो आई वॉज लाइक अ सोशल बटरफ्लाई एंड नाउ सडनली गोइंग टू अनदर सिटी जहाँ पे मैं किसी को जानती नहीं थी और मेरे इर्द गिर्द भी जो लोग थे दे वर लाइक यू नो अननोन स्ट्रेंजर्स टाइप के मुझे फील होते थे. और फिर ऑब्वियसली एक वो गैप था कि यार मैं अब नए दोस्त शुरू से बनाऊंगी. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी, ऑल्दो आई वॉज अ वेरी वेरी फ्रेंडली पर्सन एंड इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू मेक फ्रेंड्स. बट उस वक्त पे भी यही हुआ कि मैंने उस वक्त चैनल बनाया था एज एन एस्केप, कि जब मेरे साथ कुछ इस तरह से लोनली सिचुएशन हो रही होती थी ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो मैं भाग के ना वीडियोस बनाना शुरू कर देती थी. एटलीस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ लाइक एटलीस्ट द फर्स्ट ईयर वो जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई थी दे वर ऑल लाइक एन एस्केप. आई नो कि बीच में भी कुछ इस तरह की वीडियोस आई थी दैट दे वर ऑल लाइक एन एस्केप. I used to just start making videos and which is why if you've noticed, I'm not sure if you have, लेकिन मैंने अपने ग्लॉसिप्स के चैनल में अभी एक हफ्ते के अंदर 2 वीडियोस अपलोड कर दी which I have not even been doing for months, क्योंकि I was so happy vlogging, like you know vlog करने में इतना मजा आता था, everything was just perfect and I could vlog and feel good about everything and मतलब बस सब कह सकते हैं perfect था. मुझे नहीं पता, बस जो भी डिस्क्रिप्शन होती है परफेक्ट की वो परफेक्ट था, लेकिन अब एकदम से उस तरह से फील नहीं हो रहा. सो व्हेन आई सॉ माई सेल्फ रनिंग बैक टू अ चैनल वेयर आई डोंट हैव टू टॉक अबाउट माई सेल्फ एंड आई डोंट हैव टू टॉक अबाउट माई फीलिंग्स, आई रियलाइज्ड कि एक तो वैसे ही जो मेरी लाइफ में लोग हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं. लाइक आई हैव लाइक वेरी फ्यू फ्रेंड्स, इतने के मैं शायद एक हाथ पे काउंट कर सकती हूँ, लाइक दैट. इतने से मेरे दोस्त हैं और उनमें से भी जिनसे मैं प्रॉपरली बात कर सकूं वो इससे भी कम है. तो नॉट बीइंग एबल टू टॉक लाइक इन पर्सन एंड अबाउट माई प्रॉब्लम्स मेक्स मी गो वेरी क्रेजी एट टाइम्स कि यू नो लाइक मुझे बोलना है, दैट मेक्स मी फील बेटर, मगर लोगों के सामने नहीं हो पा रहा होता. विच इज़ वाई आई रियलाइज्ड कि जो मेरा एक कोपिंग मैकेनिज्म है दैट इज शूटिंग, वो ही मुझे बुलवाता है. लाइक आई एम एबल टू टॉक एंड आई एम एबल टू यू नो रियली जस्ट गेट टू द पॉइंट कि प्रॉब्लम क्या है और क्या मुझे मतलब अपसेट कर रहा है एंड मे बी आई कैन ट्राई फिगरिंग इट आउट एंड आई कैन मेक इट फील बेटर. लेकिन अभी जो सिचुएशन है दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आई कैन मेक मतलब बेटर इन एनी वे, मतलब मैं उसको बेटर कर नहीं सकती. एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट hopeless feeling that I've ever had in my entire life. And being very very honest, there are a lot of phases in life जहाँ पर बहुत सारे लोग अगर सुने तो they would be like कि यार
ये वो फीलिंग है जहाँ पे बंदा होपलेस फील करता है, या ये वो टाइम है जहाँ पे अगर मैं होती तो आई वुड हैव गिवन अप, लाइक ये वो सिचुएशन होती तो आई वुड हैव गिवन अप. बट I was really young when all of those situations happened, and even if I wasn't, I somehow coped with everything and I got better. But I feel like this situation, this minute where I am right now, it's not something that I'm able to deal with. मुझसे हो नहीं रहा. And I'm not ashamed to talk about it because very honestly, मेरे इर्द गिर्द इतने सारे लोगों के मतलब loved ones just passed away. And I know that I'm not the only one who's grieving a loss or going through something like this. मुझे ये अच्छी तरह से पता है बात, which is why I know कि even if I'm talking about this right now, there must be somebody who can relate to this. So, being very honest, it feels like life has suddenly changed 360. Not 180, because 180 पे ये होता है ना कि हाँ flip हुआ है और कुछ different हो गया है. It's turned 360 where it's like the old life has come back, where everything was hopeless and everything was helpless, and I was too young back then to feel it, and I had a lot of supporting hands on me back then, and maybe अब उनमें से वो जो एक supporting hand चला गया है तो it feels very empty and very hopeless. Everything has changed. I will not lie. Everything has changed. And maybe it will take time to accept it, or to be, I told myself to be strong and not cry. Yeah. So everything has literally changed. Everything. Like my house, the people living in it, the way it's functioning, the way I'm functioning, the way I do things, the way I used to be excited about things or happy about things. And I know I posted a lot of videos which were like very hochi, but that's the thing. When someone is going through a lot of shit, you'll see them the happiest, because they're trying to distract themselves of everything that's going around them, because they don't want to face it. They don't want to go through the feelings of what comes after it, you know, of what they will have to go through. मतलब भाग रहे होते हैं लोग उन feelings से. And although I was not running away from them deliberately, मैं जानबूझ के नहीं कर रही थी, but I know that this was one way of me spending my hours to stay up at night. Because honestly speaking, it's like पिछले 3 हफ्ते से I've not been able to sleep at night, क्योंकि when the incident happened at my house, मुझे उस रात को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, and I wasn't able to figure out कि क्यों नींद नहीं आ रही. And बहुत अजीब सी बेचैनी थी. And then Dadi knocked me on my door at like 9:30, right, to tell me the news. So I know I don't do this on purpose, and I know कि मैंने रातों को कितनी दुआएं पढ़ी हैं to just feel better, and for the person who passed away as well. मैं बोल नहीं सकती अभी भी कि who passed away, you know, होता नहीं है मुझसे. So like I can't put it in a sentence, if that makes any sense. I don't know if I make any sense about whatever I'm saying, but just know कि if I'm speaking about it, it's probably going to make me feel better. Even if I cry after this for hours, maybe it's important, and maybe it's needed, and maybe this is the need of the hour that I need to face. So I'm being really strong here talking about all of these things. तो रोज रात को that day I see it on repeat. Like मुझे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे एकदम से वो नॉक हो जाएगा फिर से, and I will hear another bad news, because every other day there is a new bad news that comes up, and I've not been able to process any of it. Like things are just piling up and piling up and piling up. तो अंदर से तो मैं नम हो चुकी हुई हूँ. Like I don't break down that easily, alhamdulillah, I don't.
अभी भी आई एम कीपिंग वेरी स्ट्रॉन्ग while talking about everything. बस एक बड़ी फनी चीज़ दिमाग में आ रही होती है. Whenever Tao used to be watching those obnoxious dramas, Pakistani dramas, and I used to be like, कहाँ होता है ये रियल लाइफ में? किसकी लाइफ्स होती हैं ऐसी इतनी अनोइंग और इतनी अपसेटिंग? एंड देन यूज्ड टू बी लाइक, होता है बेटा, ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में होता है, इट्स ऑल रियल लाइफ इंस्पायर्ड. तो मुझे ऐसा फील हो रहा होता है जैसे मेरी लाइफ एक पाकिस्तानी ड्रामा बन चुकी है सडनली, वेयर थिंग्स आर जस्ट गोइंग absurdly wrong. Like everything is just all over the place and I don't know what to do about them. तो अब जो चीज़ें ट्रिगर करती हैं वो भी बड़ी ज़ोर से ट्रिगर कर रही हैं. जैसे कि when I uploaded videos, there were messages coming up saying कि अभी डेथ को टाइम ही कितना हुआ है and you're doing all of this, like shame on you. Like I'm doing this for myself. I never did this for anybody. ठीक है, like that's very obvious. ये मैं अपने लिए कर रही हूँ and nobody out there can feel my pain even while watching this video, even while being so close to me. You can't come in my body, in my soul and feel my pain. So telling me to behave in a certain way जो आपको सही लगता है, that is like the most absurd thing ever in the world. मतलब पता नहीं क्या आपके अंदर ऐसा है जो आपको लगता है कि आप कोई सही बात कह रहे हो किसी को. खुद आप ऐसी बात सुनना चाहोगे? नहीं सुनना चाहोगे तो आप दूसरे को क्यों कह रहे हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आती बात. खैर, I didn't care much about this because I feel like I've also gone very immune to people just hating upon my stuff, which I don't really care about because I only focus on the love that I get, which I get a lot from my vlogging channel, जो मुझे पता है because we are all a family and we have lived this life together for at least this past 1 year. मुझे ये पता है अच्छी तरह से. So I feel very safe coming over here and talking to you guys because I know कि you guys are just like my family. I can talk here as much as I want and I won't be judged and I won't be, you know, like hated upon for anything that I say because you can relate to me and you can, like, you know me. That's the thing. And I can't prove myself to everyone on the internet. That's not what I'm here for. ये तो मैं करने जाऊंगी तो भाई मैं बुड्ढी हो जाऊंगी and I can't do anything about it. So I can't make everybody happy and I know that. But yeah, so I wasn't able to sleep for a really long time. That drove me insane as well. And then there were like hard-working days in the mornings जिस पे मुझे काम पे भी जाना पड़ता था चीज़ें करने के लिए because there are some things happening in the back end as well. दादी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि 3 दिन से ज़्यादा you cannot delay your life. You have to keep going on. You have to keep moving forward. इन चीज़ों से अल्लाह अपसेट होता है. जो कर सकती हो वो सिर्फ दुआओं में है, तो उनके लिए सिर्फ दुआ करो. Nothing else will matter. Nothing. So I do that bit and then I try to distract myself with how many, like with as many things as I can distract myself with, but I'm really not doing that well mentally. I can say that क्योंकि मुझे कोई like ऐसे भी करे तो I know that I will put, like I know that, and even physically I can feel that there is something wrong. Like I have these weird tremors in my hands at all times. Now I'm not sure if you can see it, but this is like something that started happening. My hands have started shaking at all times, and साथ it's like my face literally turns white in color when I'm having a very tough day. Like पूरा सफ़ेद हो जाता है, no color to my face or my skin, and I feel कि मेरा BP low हो रहा है बहुत ज़्यादा. That's when I need to lift me up, but I still don't talk about anything. So not just that, I've even noticed कि, you know, not just that, I've even noticed कि there is one day where I feel very weak, कि suddenly मेरी आंखें अंदर धसी हुई हैं और मेरा मुंह इतना सा हुआ हुआ है और पता नहीं क्या. And the other days I feel so uncomfortably bloated, यानी कि the body is even acting up. कुछ समझ में नहीं आ रहा. I don't even know why I'm making this video. इसका कोई intro or conclusion नहीं है. This is just like me sharing stuff about what's really been going on because I cannot talk to anybody in my surroundings, yani my family, because they are going through stuff of their own and I wouldn't want to upset them. So keeping myself strong and keep going and keep
doing what I do as my distraction and as what keeps me sane is the only thing that I'm doing. मतलब अगर मैं बताऊँ ना, there are so many exciting things happening in my life right now which probably will mean so much to me in a few months. I don't know, but मुझे किसी चीज़ की ना एक्साइटमेंट हो रही है, ना खुशी हो रही है, ना मुझे किसी चीज़ की वो होता है ना, लाइक यू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग और यूर लाइक वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग कि यार चलो कुछ तो है. It doesn't feel like that. It just doesn't, and I don't know when will it go. मुझे नहीं पता यार. I just feel very helpless. I honestly just thought that Toktau's presence in my life is like this very harmless, sweet existence that I feel around me at all times. But out of those 5 people that I can probably count on my fingers, 2 of them are my family members, जिनमें से एक Toktau है और उनमें से एक बुबू है. And when it happened, though, I realized that, you know, I lost a friend. I lost the best friend. So I don't know how I'm coping with like 1 month of it, but I'm surely doing the best that I can do. By the way, today, Thursday, this is the 1 month mark. And even saying it feels very weird. So yeah, a lot's been happening. I'm trying my best to be fine, but I'm not. And I don't feel ashamed talking about it because it's normal. Anybody can go through a mental health crisis, and it's better if you talk about it or you take therapy if you can't talk to somebody. This is my therapy. Like, I am doing whatever I can for myself कि मैं बात कर रही हूँ about it, and I am feeling better while talking about it. This is what therapy is. There's nothing more to it, you know. Just talk your heart out and feel better. That is just what therapy is. So normalize it and try to take care of your mental health as much as you can, because at the end of the day, that's all that really matters. It really does. And I guess we all need it as well. But yeah, that's it for this video.